यूपीएससी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी को तो आपने डेफिनेटली ही सुना होगा। इंडिया में यूपीएससी CSE is considered to be the most toughest examinations to be passed by candidates who are appearing for it year after year. Namaskar, मैं Dr. Anuritaa Bharat, your Vedic Astrologer. I have pursued my PhD in Vedic Astrology with special focus on the IRS officers in India, yani ki the Indian Revenue Service officers in India. My father has served the Government of India in the Indian Revenue Service for several years. It's a privilege for me to complete my PhD in this area, as this has been very close to my heart since my childhood. जब भी हम यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो सबसे पहला ख्याल आता है ये बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने चाहिए? These are my personal views that astrology can really help the individual or the candidate who is appearing for civil services to know their potential, to know their capabilities. There are several factors that can be seen from the perspective of astrology in the horoscope of the candidate to examine whether the candidate can successfully pass the entrance exam or not, besides the hours of hard work and labor that's been put in. The civil services examination conducted by the UPSC has a set format that the candidate first appears for the prelims, then moves on to mains after clearing the prelims, and then moves on to an interview stage after clearing the mains. After clearing the interview, the final result comes out and the candidate joins the selected service. So you see how tough it becomes at every stage of passing or clearing your examination in the format of civil services. At every stage there is a process of elimination and the percentage of selection decreases at every stage of the examination. One of the civil services that I am going to focus, and my focus has been on it for several years, is the Indian Revenue Service. कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए कुछ ग्रह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ भाव हॉरोस्कोप के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये है मेरी रिसर्च और इस रिसर्च में की कुछ फाइंडिंग्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. शुरू करने से पहले एक और बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि only 1 out of 10 selected candidates in the civil services are the first timers. They are giving the exam for the first time and they got selected as well. Students, 90% of the candidates need to give repeated attempts to clear their CSC. किस तरह के राजयोग बनते हैं कुंडली में for getting a government position? Besides the primary data received of the kundlis by the officers, मैंने काफ़ी लिटरेचर को भी रिव्यू किया था फॉर दिस पर्टिकुलर स्टडी. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी एंशिएंट टेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिस रही है मेरी स्टडी के लिए एज वेल, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गो बैक एंड लुक एट व्हाट रियली मेक्स अ राजयोगा इन अ हॉरोस्कोप. बृहत्पराशर जी ने एक श्लोक में गज केसरी योग को बहुत अच्छी तरह से समझाया था. आइए सुनिए. केंद्र देव गुरु लग्नाच चंद्राद्वा शुभ द्योगते नीच अस्त ऋग्रैर हीर्णे योगायम गज केसरी संजात तेजस्वी धनवान भवेद मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो नरः. इसका अर्थात है जब भी गुरु केंद्र में यानी कि ascendant यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस फ्रॉम दी मून अगर आपकी कुंडली में है तो उसे गज केसरी योग कहा गया है. एंड दिस योगा कैन गिव यू ग्लोरी, फेम एंड सक्सेस इन योर लाइफ.
इस तरह से काफ़ी सारे योगा मेंशन किए गए हैं जो एक सक्सेस को डिफाइन करते हैं इन आवर एंशिएंट टेक्स्ट। बहुत से योगास, कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स इन द हाउसेस आप देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रह, भाव, नक्षत्र, राशि, दशा, अंतरदशा, इन सब का योग जब बनता है तब जाके कोई कैंडिडेट अपनी मेहनत से सिविल सर्विसेज के एग्जाम को सक्सेसफुली पार कर पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल बनी है जिसमें प्लैनेट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इन ईच ऑफ दोज 50 हॉरोस्कोप्स इन दी डिफरेंट हाउसेस। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें से बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर सन रिपीट हुआ था उन 50 हॉरोस्कोप्स में से, तो वो कौन से भाव में था? वो भाव जिसमें सन रिपीटेड वॉज दी 4th हाउस। राहु सबसे ज्यादा अधिकतर कौन से भाव में गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडली में रिपीट हुए? वो भाव था अगेन नंबर 4, 4th हाउस। 4th हाउस इज वेरी क्रिटिकल फॉर knowing the success। मून सबसे ज्यादा अधिकतर कौन से हाउस में रिपीट हुआ? वो था 9th हाउस। सो अगेन द मून प्लेसमेंट इन द 9th हाउस फॉर्म्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग योगा फॉर गेटिंग इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज। मैंने अपने स्टडी में एग्जॉस्टिव हाउसेस का यूज किया था। हालांकि करियर इन गवर्नमेंट सर्विस के लिए ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर 6th और 10th और 11th हाउस की तरफ अपना ध्यान लेकर जाते हैं। मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे हाउसेस का कॉम्बिनेशन अलोंग विद द 9 प्लैनेट्स एंड द डिफरेंट नक्षत्र्स इंक्लूडिंग द दशास, अंतरदशास, द डिग्रीज, द ट्रांजिट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो आई टुक the houses, the ascendant house, that's a lagna, the 4th house, which signifies what kind of nourishment, education you have received. 5th house, which again shows the purva punya karma as well as the intensity with which you can prepare for the civil services, the competitive examinations, the intelligence that you have inherent in you, and the success of competition. Again, 6th house for your service. 8th house for the income tax, the IRS. It was very essential for these kind of services where you are dealing with the hidden source of income. 8th house became very, very conspicuous. 9th house pertaining to the generations of this service. This is not a new service. This has been there for years in our system. 10th house, of course, obviously I have used it for the career establishment, the fame, the glory that you might be receiving when you clear the government service examination. And 11th house, the source of income, the network, circle of bureaucrats. Do you have that in your horoscope or not?